morning, everyone. This is the sum we will be doing today. The balance sheet of Messrs. A and B and Messrs. C and D as on 31/12/2013 were as follows. Liabilities may capital is given. Capital of all the four partners is 10,000. A, B, C, and D. In A and B, the partners are A, B, and in C and D, the partners are C, D. Creditors 15,000, 10,000. There is a loan which is there only in C and D. Loan is there only in C and D. And then we have, then what do we have in the uh, outstanding expenses is there 2,000, 3,000. Then in the asset side we have land, machinery, furniture, debtor, stock, cash and bank balance. Now the two firms decided to amalgamate and form into A, B, C, D and company. Matlab the new firm which will be formed after amalgamation, merging, combining A and B and C and D will be known to be called as A, B, C, D and company. The new firm ka name is given A, B, C, D and company with effect from 1/1/2014, with effect from 1/1/2014. And here profit, see, partners would share profits and losses equally between themselves as they were doing prior to amalgamation. Matlab, what does this see? What does this make us understand? That the partners would share profits and losses equally among themselves. The new profit sharing ratio will be equal partners, equal profit sharing ratio. And even now, before amalgamation also, they are equal partners. मतलब जो ओल्ड फर्म में प्रॉफिट्स डिवाइड करना है वो भी इक्वली है, एंड न्यू फर्म में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा that will also be equal. And they agreed to the following revaluation of assets and liabilities. Particulars. Now, asset and revalued figures have been given. A and B, for A and B and C and D, land's new value is given 10,000 for both the firms. Machinery, furniture, debtor, stock, and then outstanding expenses. ये सारे assets and liability का revalued figure दिया है. And in addition to the above, it was decided that the new firm would not take over the loan of C and D. See, देखो, there is a loan in C and D. When we go to the balance sheet of C and D, liability side, there is a loan in C and D which the new firm will not take over. If the new firm will not take over, the what is the amount of the loan? It is 10,000. Do we have so much cash that we can pay that 10,000 from the business money? No, business में तो सिर्फ 1,000 है, and the loan is of 10,000, so हम pay भी नहीं कर सकते. So what will happen? This loan will be taken by the partners. ये जो loan है वो कौन ले लेगा? The partners will take over. And then see what else. इसके बाद मतलब लोन जो है वो न्यू फर्म इज नॉट टेकिंग ओवर, सो दिस विल नॉट कम इन द परचेज कंसिडरेशन. ओनली दोस asset and liabilities will come in the purchase consideration.
which will be taken over by the new firm. So loan is not taken over, so it will not come in the purchase consideration. इसके बाद the goodwill of A and B and C and D would be 10,000, 15,000 respectively. This is given, goodwill ka new value is given in the first instance. But for the purpose of the balance sheet of the new firm, the combined goodwill will be valued at 12,000. देखो 10,000 and 15,000 is how much? Uh, 10,000 and 15,000 is how much? Sorry, there is a mistake here. 10,000 and 5,000. The question says that the goodwill of A and B is 10,000 and the goodwill of C and D is 5,000 respectively. But for the purpose of the balance sheet of the new firm, the combined goodwill would be 12,000. मतलब A and B को the new firm will give 10,000, C and D the new firm will give 5,000. But when we prepare the new balance sheet, वहाँ पे जो combined goodwill आएगा, it will be 12,000. मतलब what is the difference? 10 plus 5 is 15,000. But in the balance sheet after amalgamation, the goodwill will appear at 12,000. Means the difference is 3,000. वो 3,000 के goodwill को write off करना पड़ेगा. We will have to write off the goodwill which is not to be shown in the balance sheet. टोटल गुडविल इज 15,000, तो 15,000 न्यू बैलेंस शीट में आना चाहिए था. बट दे से दैट द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म गुडविल combined goodwill would be valued rupees 12,000 for the purpose of balance sheet of the new firm. After amalgamation, the combined goodwill would be valued at 12,000. Means the difference will be 3,000. So that 3,000 we will have to write off. तो हम राइट ऑफ करेंगे वो गुडविल को, तो हम न्यू रेशो में राइट ऑफ करेंगे. सो पे अटेंशन एवरीवन, व्हेन द गुडविल इज रिटर्न ऑफ, when the goodwill is written off in the new partner's capital account, it will always be the new ratio. So is the new ratio given in the question? Is the new ratio given in the question? The new ratio is given that the partners will be equal partners. The new ratio will be equal because the profits and losses would be shared equally. See, it is told that the new ratio will be equal. The new ratio will be that the profits and losses will be shared equal. अगर न्यू रेशो नहीं दिया तो हम अज्यूम करेंगे दैट दे आर equal partners. But here in this question, the new ratio is also 1:1:1:1:1. That is equal partnership. The partners after amalgamation will share profits and losses equally. Now इसके बाद the that the reconstructed capital would be 14,000 each. मतलब the new capital will be 14,000 each. Partners introducing cash if any. मतलब if there will be any difference in the new partners capital account, अगर 14,000 से ज़्यादा money, if मतलब how much is required, 14,000. बट अगर कुछ भी कम ज्यादा होगा तो दैट विल बी डन बाय यूजिंग ब्रिंगिंग इन और पेइंग इन कैश. they say if there is any balance, if there is any difference in the capital, जब हम देखते हैं बंद करते न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एनी डिफरेंस विल बी देयर, दैट विल बी adjusted through cash. That will be adjusted through cash. In the previous sum it was current account, but in this sum they say difference if any, it will be settled by introducing cash. So this is the question. What are we required to do?
accounts in the books of A and B and C and D and the opening balance sheet. But any sum of amalgamation have to start, any sum of amalgamation have to start with the purchase consideration. So what we will do, A, it will be all assets to be taken, or all assets taken over, all assets taken, 1 minute, all assets taken over by, who is taking, new firm in, what will come here, new firm in revised, if revised value is not given, we will take the book value. So let us see the question. What all assets are given? Land is there. Land का नया value दिया है. Yes. Old value was 10,000, 12,000. New value is 10,000, 10,000. अगर न्यू वैल्यू दिया है तो पीसी में हमें न्यू वैल्यू ही लिखना है. इफ द न्यू वैल्यू इज गिवन, we will be taking the new value in the purchase consideration. If new value is not given, we have to take the old value. So इसके बाद after land, what is the next asset? आफ्टर लैंड मशीनरी है. यहाँ पे मशीनरी का भी न्यू वैल्यू दिया है 7,000 एंड 8,000, 7,000 एंड 8,000. सो हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस वैल्यू 7,000, 8,000 फॉर मशीनरी. सो राइट मशीनरी 7,000, machinery 7,000 and 8,000. So how much is it coming? दोनों को add करो. 7,000 and 8,000. It is 15,000. Later on, after machinery, it is furniture, and furniture new value also given. Old value is there and new value is there. Whenever new value is given, we will take the new value for purchase consideration. So the revised value is 2,500, 2,500. So हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे furniture, furniture, how much is it given? दोनों के लिए 2,500. So when we add both 2,500, we get 5,000. आफ्टर फर्नीचर डेटर स्टॉक. तो यहाँ पे भी देखो किसका न्यू वैल्यू दिया, डेटर 5,500 and 7,000. When the new value is given, we will take the new value. So here we will write debtors 5,500 and 7,000. So we will write down debtors 5,500 and 7,000. So 5,500 and 7,000. After data stock is there, and stock ka bhi new value is given 8,000, 8,000. So we will go to the purchase consideration and we will write stock, stock 8,000, 8,000. दोनों का it is 8,000. So add both the 8,000. How much are you getting in the total column? Here we have not added this 7,000 and 5,200 will be 12,200 and this will be 16,000. Now, after stock, which is the asset in the balance sheet? It is cash and bank balance. देखो cash and bank balance का revised value कैसे रहेगा? 1,000 will always be 1,000. मतलब cash का नया value नहीं हो सकता. तो cash का जो old value दिया है, the same value we will take. What is the amount given of cash? Cash ka value is given 3,000 and 1,000. So we will write down here 3,000, 3,000 and 1,000, which will come to
4,000. Now tell me, is there any other asset which we have to write? Is there any other asset? Because jitna bhi asset balance sheet mein tha, we have written. Is there any additional asset which we have to record in the asset side? Is there any other asset that will come? Yes, correct. Yes, correct. It is goodwill. What other asset will come? It is goodwill. So we will write goodwill, and goodwill का यहाँ पे amount दिया है 10,000 and 5,000. So we'll write here 10,000 and we will write here 5,000. When both is added, we get 15,000. So we have written all the assets. Now the total of A, इससे लेस करेंगे B, all liabilities taken over by new firm in revised, if given, not given, then book value. If revised value not given, new value not given, then old value. So liability side में जाओ, हमारे पास capital है which will come in the capitals account. Then we have creditors. Creditors का new value is not given, so we will have to write the old value. What is the old value? 15,000 and 10,000. So हम यहाँ लिखेंगे creditors. Because the new value is not given, we will write the old value 15,000 and 10,000. So this will be 15,000 and this will be 10,000. So total will be 25,000. And उसके बाद there is the next liability which is loan. लोन के बारे में क्या क्वेश्चन में दिया है? द न्यू फर्म वुड नॉट टेक ओवर द लोन और सीडी. तो लोन जो है दैट द न्यू फर्म विल नॉट टेक ओवर, ऐसा बोला है. सी दिस पॉइंट हियर, what they have told, the new firm would not take over the loan of CD. CD में जो लोन है, the new firm is not going to take over, and we have written, हम वही liability को लिखेंगे जो नया firm लेके जाने वाला है. So this will not come in the PC. And outstanding expenses का new value is given. So we will write the new value 2,000 and 3,500. We will write the new value. What is it? 2,000 and 3,500. So we will write here outstanding expenses. Outstanding expenses कितना है? It is 2,000 and 3,500. So 2,000 and 3,500. When we add both, it will be 5,500. So now we have written all the liabilities. So इसका भी total करो, इसका भी total. So how much it will become? 17,000 and this will become 13,500. We will add both, it will be how much? 17 and 13,500 will be 30,500. Now what do we want? हमें जो चाहिए, that is, पहले तो we want the total of the assets. How much are you getting? How much is the total of all the assets? Is it coming 46,000? Is this one coming 41,500? 41,500. So when we add both, it is how much? It is 87,500. Now minus and tell me what is the PC you have got. 46,000 minus 17,000. It is how much? How much is the purchase consideration? 29,000. When we minus
and 28,000. Correct? So this is what? This is the purchase consideration. How do you get the purchase consideration? A minus B. So total of asset minus total of liability. When we do, we get the purchase consideration. So we've got the purchase consideration. Hope this is correct. You all are also getting the same amount. So with this, we will start with the sum, the final sum. तो सम में सबसे पहले what we will do is in the partners capital account we will transfer the balance. What we will do? We will transfer the balance by balance brought down. So यहाँ पे what is the balance? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. How do, see how, from where did I got this 10,000? Look into the question. All the four partners capital is 10,000. All the four partners capital is 10,000. So what I have written? I have written 10,000 of all the partners capital. Now we will go, because any reserve is not there, we will go to realization account, and in the debit side हम लिखेंगे to various assets. अब to various assets लिखने के बाद हम क्या करेंगे? We will go to the asset side of the balance sheet given in the question. We will go to the asset side of the balance sheet. We'll go to the asset side. 1 minute. And we will copy all the asset. So 1 minute, we will copy all of them and we will write down here in the debit side of realization सारे assets को लिखेंगे. इसके बाद amount क्या लिखेंगे? What will be the amount? We'll copy all the amount of the balance sheet. All the amount of the balance sheet. Same way, we will go here. We will copy all the amount of CD and AB. और यहाँ पे उनके कॉलम में लिख देंगे because in the assets in the realization account what do we do? We write all the amount in the balance sheet value. तो इसके बाद credit side में we will write by various liabilities. This is the step we do in every sum. तो let us see capital के अलावा क्या other liability है. It is creditor, loan, outstanding expense. Creditor, loan, outstanding expenses. So copy करेंगे. As it is, we will copy. And what we will do? We will write the amount also. What is the amount? 15,000 and 2,000. So I will write here, instead of copying, I will write here 15,000 dash because loan to hai nahi, and this one is 2,000. Same way, I will check what are the amounts here. 10,000, 10,000 and 3,000. Balance sheet का ही amount चाहिए. So I will write down 10,000, 10,000. Loan is also 10,000 and outstanding expenses is 3,000. So we have written this. दो स्टेप हो गया. सबसे पहले कैपिटल ट्रांसफर किया इन द कैपिटल अकाउंट, असेट ट्रांसफर किया इन द डेबिट साइड, लाइबिलिटी ट्रांसफर किया इन द क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट वैल्यू. तो वन मोर थिंग यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्या हमें नाम पता है न्यू फर्म का? ABCD लिमिटेड अकाउंट.
because we know the name of the new firm. क्वेश्चन में दिया हुआ है the name of the new firm is ABCD Limited. In the we saw in here the name of the new firm, the firm amalgamated and formed into ABCD and Company. ABCD and Company. So the name of the new firm is ABCD and कंपनी अकाउंट. सो यहाँ पे भी हमें वही लिखना पड़ेगा न्यू फर्म के जगह में ABCD एंड कंपनी अकाउंट. तो ब्रैकेट में इफ यू वांट यू कैन शो दैट इट इज व्हाट, इट इज न्यू फर्म. नहीं बताओगे तो भी चलेगा, बट इन ब्रैकेट फॉर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन न्यू फर्म. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीसी, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करते, पीसी ट्रांसफर करते. तो पीसी का अमाउंट इज हाउ मच, पीसी का अमाउंट इज 29,000 and 28,000. So we'll write here 29,000 and here we will write 28,000. So PC record किया. तो next effect बाई का opposite 2 में 2, what is the name of the account, realization account. कितना, what is the amount of PC, 29,000 and 28,000. So हमने ये वाला step भी कर लिया. Now what is the next step? The next step now is whether there is any asset not taken over by the new firm. हमने देखा सारे के सारे असेट जो भी बैलेंस शीट में था इज इन द पीसी. मतलब ऐसा कोई असेट नहीं है which was in the balance sheet but not in the PC. All the assets are taken over. Then my next question is there any liability not taken over by the new firm? Is there any liability not taken over by the new firm? Yes, there is this loan which is not taken over by the new firm. अगर न्यू फर्म ने नहीं लेके गया तो वो पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा. तो लोन इज हियर इन द क्रेडिट साइड. लोन कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में है. तो उसको पार्टनर्स को कैंसल करने के लिए वी हैव टू शो इन द ऑपोजिट साइड. सो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लोन सेटल करना है ना. सो पार्टनर्स आपस में सेटल करेंगे लोन को. लोन बाद में दे विल सेटल द लोन बिकॉज न्यू फर्म इज नॉट रेडी टू टेक दिस लोन. तो ये लोन किधर है, C&D में है. तो C&D इसको आपस में सेटल करेंगे. हाउ विल दे सेटल द लोन, व्हाट इज द रेशो, दे आर इक्वल पार्टनर्स. सो इक्वली दे विल सेटल द लोन. सो दोनों लोन का कितना देंगे, 5,000 each they will have to give. They will have to give 5,000 each. So what we will do, ये हमने कर दिया बाई पार्टनर्स में. ये किस कौन बेयर करेगा ये लोन को, पार्टनर्स विल बेयर. तो इसका दूसरा इफेक्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ऑपोजिट in the partners capital account it will be by, in the partners capital account it will be by, what is the name of the account, कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट. किसके लिए, लोन के लिए. किसको मिलेगा, who are the partners who will have to bear the loan, C and D. Because A and B में there is no loan, only C and D में loan is there. So यहाँ पे there is no loan, so nothing will come. इसके बाद और कोई liability है which new firm has not taken over? No, only one liability was there in C and D. तो अब हमारा next step क्या है, हमारा next step है to set close the account. So 10,000 plus 10,000 plus 28 is 48,000. 48 plus 3 is 51,000.
यहाँ पे 29,000 plus 2,000 is 31,000. 31,000 plus 15,000 is how much? 31,000 plus 15,000 is 46,000. So credit side का total मिला 46,000 and 51,000. Debit side में तो हमने क्या लिया है? We have taken the full balance sheet total. So 37,000 and 43,000. Now see which side is heavy. Which side is heavy? Credit side is heavy. Difference क्या आ रहा है? What is the difference coming? No. This is not 43. 1 minute. This is 43. नहीं, this is 53,000. Debit side का total is coming 53,000. See, 43 plus ये loan है 10,000 का, that becomes 53. मतलब C and D का debit side is heavy. Can you see that? C and D's debit side is 53,000 and credit side is 51,000. मतलब कौन सा side heavy है? Debit side heavy है. Are you getting the point? In the C and D, which side is heavy? In the C and D, debit side is heavy. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो भी आएगा वो भी पार्टनर्स को मिलेगा. Capital account. When we see, we can see that the A and B का debit side is heavy. कितना 3,000 कितना आ रहा है? What is the difference? 9,000. Okay, what is the difference between? It is 9,000. ये 37,000 है, and the other side credit debit side is 37,000. Credit side is 46,000. So the profit का difference is, so 1 minute. यहाँ पे इट इज प्रॉफिट. मतलब अगर क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट है. कितने का प्रॉफिट है? 9,000 का. द प्रॉफिट अमाउंट इज 9,000. सो आई विल राइट डाउन 9,000. सेम वे अगर हम क्रेडिट साइड में देखें सी एंड डी का, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, what is it is what it is called as loss, because expenses ज्यादा है इनकम से. तो ये लॉस कितने का है? 53,000 माइनस 51,000. ये लॉस है 2,000 का. ये लॉस कितने का है? द लॉस इज ऑफ 2,000. सो अब डिवाइड करो. यहाँ का लॉस सी एन डी को मिलेगा, यहाँ का प्रॉफिट ए एन बी को मिलेगा. हाउ? इक्वली, बिकॉज दीज आर इक्वल पार्टनर्स. इक्वल पार्टनर्स है तो इक्वली मिलेगा. सेम वे यहाँ पे भी इक्वल डिवाइड करो लॉस को. कितना मिलेगा? 2,000 को इक्वली डिवाइड किया तो इट इज कमिंग एज 1,000. सो इसका दूसरा इफेक्ट पास करो. बाई का ऑपोजिट, बाई का ऑपोजिट इधर वी विल हैव टू डू टू realization account. ब्रैकेट में we can write this is loss. किधर है? सिर्फ सी एन डी में it is there. सी एन डी में it is there 1,000 and 1,000. सेम वे यहाँ पे भी प्रॉफिट का ऑपोजिट इफेक्ट पास करो. टू पार्टनर्स बिकम्स बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, एंड यहाँ पे इट इज प्रॉफिट. सो हाउ मच इट विल कम? प्रॉफिट 4,500 and 4,500. Done. Now we have to close this account. We have to close the partners capital account. कितना टोटल आ रहा है? 14,500. 14,500. इधर क्या आ रहा है? 15,000. 15,000. So यही सेम we will write here 14,500, 14,500,
15,000 एंड 15,000. नाउ इसको सेटल करेंगे. सो जो भी डिफरेंस आएगा विल कम टू ए बी सी डी एंड कंपनी विच इज अ न्यू फर्म. तो ये जो भी बैलेंस आएगा विल गो टू द न्यू फर्म. सो बैलेंस, सो क्या बैलेंस आ रहा है यहाँ पे? सेम अमाउंट आएगा बिकॉज माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है. क्रेडिट साइड सेम अमाउंट डेबिट में आएगा विच इज द क्रेडिट साइड टोटल. बट यहाँ पे 15,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, वी विल गेट 14,000. we will get 14,000. So now what we will do, opposite effect, we will pass in the two ABCD will become by partners capital account. By partners capital account. और कितने पार्टनर्स हैं? ए बी सी एंड डी. अमाउंट क्या आया है? 14,500 ए का, 14,500 बी का, and C and D ka how much we have got? 14,000 and 14,000. See whether our, see if it is tallying, see whether our new firm is tallying. 29,000 and 28,000. So with this the new firm is tallied. नाउ दो चीज बाकी है, एक तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉट एवर न्यू फर्म में हमें बैलेंस मिला उसको हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं. न्यू दैट वी टेक द ओपनिंग बैलेंस. सो ओपनिंग बैलेंस कितना मिला है? 14,500, 14,500, 14,000 and 14,000. क्वेश्चन में one more thing is given, that is question में closing balance is given, that all the partners should have how much capital is given in the question. कितना कैपिटल होना चाहिए क्वेश्चन के लास्ट लाइन में दिया है 14,000. The reconstructed capital of the partners would be 14,000 each. मतलब सारे पार्टनर्स को कितना लेके आना चाहिए? न्यू कैपिटल इज गिवन, हाउ मच इट इज? 14,000 ईच. मतलब ऑल द पार्टनर्स हैव टू गेट 14,000 गिवन इन द क्वेश्चन. 14,000 दिस इज गिवन. अब गुडविल नया फर्म का एक और चीज है, गुडविल राइट ऑफ, या तो last sum में भी wrote off, cancelled all the goodwill, because question में it was given that goodwill has to not to be retained in the new firm, goodwill not to be retained in the new firm. But now they have told that goodwill नया firm में चाहिए, but कितने amount के लिए चाहिए? Only for 12,000. But the new goodwill is 15,000. 10 plus 5 15. बट हमें बैलेंस शीट में, अमालगमेटेड बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन में वी वांट ओनली 12,000. सो एक्स्ट्रा जो 3,000 है वी विल हैव टू राइट ऑफ. एक्स्ट्रा जो 3,000 है वी विल हैव टू राइट ऑफ. और किधर राइट ऑफ करेंगे? इधर राइट ऑफ करेंगे. तो यहाँ पे आएगा 2 गुडविल, बट कितना? जो 3,000 है उसको राइट ऑफ करना इक्वली. क्यों इक्वली राइट ऑफ करेंगे? बिकॉज एज पर, चाहिए तो आई विल राइट हियर, एज पर न्यू रेशो. न्यू रेशो इज इक्वल पार्टनरशिप. अगर न्यू रेशो कुछ और रहेगा तो वो रेशो में डिवाइड करना होता है राइट ऑफ करते वक्त गुडविल को. व्हेन वी आर राइटिंग ऑफ द गुडविल it should be always in the new ratio. If new ratio is not given, we will divide equally, and in this question new ratio is only equal, so हम equally divide करेंगे. So how much you get? 750. How much you get? 750. So I will write 750. Now tell me which side is heavy. कौन सा साइड हैवी है, डेबिट या क्रेडिट? यहाँ पे वी सी कि डेबिट हैवी है, पर यहाँ सब जगह डेबिट हैवी है. एवरीवेयर
Debit is heavy. Can we see everywhere the debit heavy? So वही सेम अमाउंट इधर भी लिख लेते. 14,750, 14,750. Now जो भी difference रहेगा ना, whatever the difference is, that difference will be in cash. कैसे पता? Question में they have told any difference will be in the cash. Last question they have told current account, but in this question they say partner introducing cash if any. अगर question में difference नहीं दिया रहेगा तो हमें cash या करंट अकाउंट वी कैन अज्यूम ऑल्सो, बट नॉर्मली दे विल गिव दैट किस में डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस कहाँ पे ट्रांसफर करना चाहिए. दे हैव टोल्ड दैट डिफरेंस जो भी होगा विच विल बी इन द कैश. सो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. एनी डिफरेंस विल बी इन कैश. तो ये कितना रहेगा? 250. ये कितना रहेगा? 250. यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 750. What is the difference in the last column? 14,000. 750 में 14,000 minus करो. 750. We have got the difference of cash. Now what we will do? We will go to the balance sheet और उसमें सबसे पहले जो हमारा न्यू कैपिटल है वो लिख लेते हैं. न्यू कैपिटल कितना है? See, closing capital given in the question that all the partners will get the कैपिटल ऑफ 14,000. इसके बाद ये असेट साइड और लाइबिलिटी साइड में क्या लिखे? गो टू द पीसी. पीसी में जाके सारे असेट्स को कॉपी करो. कॉपी ऑल द असेट्स as it is given in the PC. Go to the balance sheet. One after another write down. You don't have this option to copy paste. तो एक एक करके पूरा लिख दो. उसके बाद दोबारा पीसी में जाओ. सॉरी, दोबारा पीसी में जाओ और जो टोटल अमाउंट आया है उसको कॉपी करो ऑफ द. इसलिए तो हम टोटल निकालते ताकि बैलेंस शीट बना सके. सो यहाँ पे लेकिन गुडविल में हमने 15,000 में 3,000 राइट ऑफ कर दिया. तो द न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल विच विल कम इन द बैलेंस शीट इज 12,000. आई हैव हाईलाइटेड इट क्योंकि हमने क्या किया? 15,000 में से हमने माइनस किया 3,000. हमने क्या किया? ब्रैकेट में चाहिए तो हमने राइट ऑफ किया 3,000. सो फाइनल अमाउंट जो मिला that is 12,000, so that you don't get confused. And yes, one more thing, कैश बैलेंस का भी नया वैल्यू लिखना पड़ेगा. 4,000 पहले से था, अब कितना आया? 250 केम, फिर और 250 आया, एंड सेन 750 केम एंड और 750. ये सबको ऐड करके बताओ कैश का नया फिगर क्या आ रहा है. व्हाट इज द न्यू वैल्यू कमिंग फॉर कैश? 4,000 प्लस ये 500 हो गया, 4,500. एंड दिस इज कमिंग टू हाउ मच? 6,000. इज इट कमिंग टू 6,000? सो वी विल राइट 6,000. नाउ हम लोग को एक और चीज बाकी है. लाइबिलिटी भी थोड़ा पीसी में है. पीसी में दैट इज लाइबिलिटी ऑल्सो. तो वो लाइबिलिटी को भी वी विल कॉपी. we'll copy the liability also. So I will copy it. Creditors outstanding expense. What is the amount? 25,500, 25,000 and 5,500. So I will write here. I will write here. Creditor amount क्या है? 25,000 and 5,500. Now what we will do? हमने सारा लिख दिया. अब इसको tally करो. This should tally. This amount, this balance sheet should tally. See what tally amount you all are getting. Look the tally amount क्या मिल रहा है. What is the tally amount? Check for the tally amount. 1 minute. See what at what amount the sum is getting tallied. 14,000 plus 14,000 चार बार, फिर 25,000 and 5,500. Are we getting 86,500?
देखो दोनों जगह में 86,500 आना चाहिए, एंड विद दैट गेटिंग इट वेरी गुड. विद दिस द सम इज tallied and the sum is done.